meeting. Okay. So we are live on YouTube and we have started our session on Git and GitHub for beginners. So in this video, we will continue our session in English, but I will mix explain in Urdu. Let me record this meeting. Sorry. So we are live on YouTube and we have started. Okay. So yeah. So in this video, we will cover all about Git and GitHub as a beginner, which will help you. So basically, as a beginner, so that you can upload your repos on GitHub and you can clone your repos on your PC and you can use that code. Because this is the article that I have written. We will follow that. We will be for our today's session. We will cover all the topics that I have written here. Okay, I will edit this article as well. I will share that article in comments as well, and after improving it a bit. ठीक है. So हम ये जो आर्टिकल में चीजें लिखी हुई हैं ये हम सारी आज के कवर करेंगे गिट के बारे में. So let's start reading it. Git using CLI plus VS Code. So हम Git को CLI के थ्रू एंड VS Code के थ्रू दोनों को कैसे यूज करते हैं दोनों के थ्रू वो हम इसमें सेशन में आज कवर करेंगे. After this tutorial, you can start pushing your code on GitHub and manage your work better. ठीक है. So and you will start loving it and I'm sure you will say जिंदगी गुजार है. So basically Git is a very powerful tool. Despite आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, despite आप whichever framework you are using, whichever technology you are using, or what level of developer you are, basically at the very beginning level you have to start using Git, and every developer starts using Git while they are starting development. So yeah, so even if you are learning HTML CSS right now, it is the right time to start using Git. Okay, don't worry about it. Okay, it's a difficult language, or it's a difficult tool maybe, or that you need some time, or you will learn something before you start using Git. No. So whatever stage you are, आप किसी भी level के developer हैं अभी, whatever level you are, you can learn Git and you should start using Git right away from right now. Okay. So we do another video on Git branches, another video on advanced topics like branches and merge conflicts, etc. ये दो कुछ topics हैं वो we will cover in another video. ठीक है. So what is Git? It's a version control system. What is the meaning of version control system and what is Git? So basically version control system means that it is kindly share the screen. Oops. No, sir, it's shared. I can see you. No, you're seeing me, but you guys were not seeing my screen. Oh, yes. Thank you, Daud. Thank you so much that you mentioned it. So please guys speak up when I make such kind of silly mistakes, so that, like, for example, if my voice is not audible or my screen is not shared, I'm talking about some screen and something. So yeah, thank you, Daud. So okay, let me repeat just quickly. I said that we will be covering everything from this article. हम इस आर्टिकल के थ्रू हम इस सेशन में सारी चीजें कवर करेंगे, इसमें जो भी टॉपिक्स हैं. और बस मैंने अभी यही पार्ट पढ़ा है पहला वाला कि हमने इसमें आज का ये सेशन अगर आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ यू कैन पुश योर कोड, हाउ यू कैन अपलोड योर कोड, और हाउ यू कैन यूज द कोड दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन GitHub on your local PC. If you are chatting, I'm not now. I will be not. Daud is saying zoom it. Okay, I will zoom it, but maybe I may miss your messages. So you please use voice. I may miss your messages on chat. So here after using Git, so you may say zindagi guzar hai. ठीक है ना. So and you as a beginner you have to start using Git. Baki there are some concepts like branches and merge conflict we may cover. We will not cover in this video. We may cover in another video. We will target it on basic concepts and commands, so that you can start using it right away. ठीक है ना. You can start managing your projects on Git and GitHub. ठीक है. तो हम अभी बेसिक्स करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे बेसिक्स होंगे. वो सारा आप अपना अपने लेवल के प्रोजेक्ट्स जो हैं आप उसको यूज कर GitHub पे डिप्लॉय करना और उस पे मैनेज करना, वर्जन कंट्रोलिंग करना आप स्टार्ट कर लेंगे. सो व्हाट इज Git? Git is a version control system, which means that you can control multiple versions of your application, of your software, whatever you are building, whatever website you are building, or whatever project that you are working on. So which means कि जो भी आप Git के ऊपर आपका कोई भी प्रोजेक्ट या आप कुछ भी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके आप वर्जन्स बेसिकली होंगे. आप उसका एक काम कर लेंगे, आप उसके बाद कुछ नया काम करेंगे तो वो नया वर्जन है, फिर नया काम करेंगे नया वर्जन है. ठीक है. अब रिमूव कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, बड़ा फीचर डालें, छोटा डालें, वो अलग अलग वर्जन है. सो दीज आर वर्जन्स. डजंट मैटर के वो जैसे डजंट मैटर कि कोई प्रॉपर उसका नंबरिंग क्या है उसको हम नहीं बदल करें, लेकिन उसका वर्जन कह सकते हैं. यानी कि सिंपल एज दैट कि अगर आपने फॉर एग्जांपल यू हैव बिल्ड सिंपल HTML पेज and you have written my heading, but now you want to change it to my
instead of saying my heading, you want to give the title your own name. You want to say Aves Ali. So that is now a new version. Okay, na? So the old version, it was written my heading. So now somehow you want to track, you want to keep track what was written initially and what was written after that. So that power is given by Git. So Git can help you that. So in whatever changes were made in the file, first time, second time, third time, from the beginning, so you can keep track of it using Git. So now you understand the power of Git. So Git क्या करता है, बेसिकली आपके एक फाइल में आप कुछ काम कर रहे हैं, आपने कुछ चेंजेस कर दिए, तो उसके बाद पहले क्या था आपको ये कैसे पता लग सकता है, वो आपको गिट की मदद से पता लग सकता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें, कोई भी आप गिट पे अपना भी प्रोजेक्ट बनाएंगे या कोई गिटहब से कोई प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि उसमें पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, फ्रॉम टाइम टू टाइम सिंस द बिगनिंग उस प्रोजेक्ट में क्या क्या काम हुआ। सो दैट इज द पावर ऑफ गिट। ओके, आई होप it is clear with you version control system, why do we call it version control system and why it is important, ठीक है ना। So is there any question so far? किसी को कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन इंग्लिश और उर्दू, that is up to you. Sir, there is a question, but I think it's a little too early to ask this. But what is the difference between GitHub Action and Vercel? That is absolutely, you are right, that is not the right time to ask this. Yes, sir. Okay, pass it. Any other question? समझ नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है। तो मैं अभी उर्दू में भी हर चीज जो भी पढ़ाऊंगा आपको उर्दू में भी बताऊंगा, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अच्छा जी, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। Sorry, I hope my screen is visible and all like that, and my video is visible and I am audible, right? I think I clicked some configuration, something. Am I audible? And Yes, sir. Yes, sir. We can see your mouse move. You can see my mouse move. Okay, great. So now, what is, we covered this part, what is Git, we covered this theory. हमने सिर्फ अभी ये देखा कि Git hack है, अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया। अब हम देख लेते हैं Git versus GitHub. The very common beginner mistake is that they think Git and GitHub are both same. Well, in reality, they are not. They are different. So, is there anybody who can tell me what is the difference between Git and GitHub? तो Git और GitHub different है क्या? कोई मुझे बता सकता है कि आप में से पहले बताया कि Git और GitHub क्या है? Hello, sir. Can I speak? So Git is a local version which we installed on our local PC, and GitHub is the internet version or cloud version where we save or backup our code. Perfect. Anybody else? I will explain it to you in easy way as well. मैं दोबारा आपको explain करूँगा. But anybody else want to share his thoughts? Yes, sir. The benefit of GitHub is we can collaborate with teams and other developers, but in locally it's difficult. Okay. Basically, Git is a command line tool which we can use to control version, which we can use for version controlling. Whereas GitHub is a website where we can see changes, open source projects, and furthermore. Exactly. So now to put it in a single line, and in a simple words, to put it in a single line, Git is the main tool that creates the versions, that manages all the application or version controlling. That Git does the main thing. What is GitHub? GitHub is nothing but just a host, a server where we can, just a storage, you can say for now, where you put your code, but that's it. GitHub is just a storage where you put your code. GitHub does not do version controlling. Git does. Git is installed locally. ठीक है, Git is installed locally. Git does all the version controlling, and when the version controlling is done, you want to, it is present in only in your laptop when you do it, but you want to put it on internet. So when you want to put it on the internet, to upload it on GitHub. That's it. So क्या है Git और GitHub में फर्क? Git वर्जन कंट्रोलिंग असल में Git ही करता है, सारा काम Git का है। GitHub कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप एक वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट समझ सकते हैं, होस्ट या सर्वर, जो भी आप स्टोरेज जो भी कहना चाहें, वहां पे हम अपना जो वर्जन कंट्रोलिंग वाला कोड है वो रख देते हैं, ठीक है ना। Git सारा मैनेज करता है, Git लोकली पड़ा होता है, वो सारा मैनेज कर होता है, लेकिन वो कोड अभी हमारा सिर्फ लोकल पे, पीसी पे, उसी लैपटॉप पे होता है। हमें उसे वर्ल्ड के साथ शेयर करना है, इंटरनेट पे शेयर करना है, तो वो हम GitHub पे डाल देते हैं। So similarly, we have alternative for GitHub, which is Bitbucket, GitLab, etc. But they all use Git under the hood. They all have to use Git. They all are based on Git. Even GitHub is using Git, Bitbucket is using Git, GitLab is using Git. All of them are using Git. Okay, you can use any of them. Keep your
Keep your mics mute, pros and girls, if you don't have to share anything. Okay, let's go ahead. So हमने देख लिया कि Bitbucket, GitLab, GitHub जो है ये तीनों बस एक रिमोट सर्वर्स हैं जहाँ पे हमने कोड रखना है, बस कोड सेव रखते हैं. असल वर्जन कंट्रोलिंग गिट करता है. We will see in again in conclusion the difference between Git and GitHub. ये सब एक बार कर लेंगे हम, एंड कंक्लूजन में आपको दोबारा बताऊंगा, आपको फिर समझ आ जाएगी what's the difference between Git and GitHub. Importance of Git I have already shared with you. It doesn't matter which technology you work on, it is most likely that you are using Git, that you will use Git. So every developer use it, whether it is a mobile developer, web developer, data engineer, whatever the job description, job title he has, he is using Git if he is working on code. ठीक है, जो भी कोड पे काम कर रहा है, कोड लिख रहा है, वो बेसिकली गिट यूज कर रहा है. डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन एंड फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन. सो नाउ लेट्स गेट आवर हैंड्स डर्टी एंड लेट्स स्टार्ट यूजिंग गिट. तो हम अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं. डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन एंड फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन. सो I hope it should be pretty straightforward. So how do we proceed? Just a minute. So first we will do git download, and you will see on the first page, you can click on this. I made some spelling mistake, but Google is smart. It will show me the correct results. You can go to this website. आप git download लिखेंगे और इस लिंक पे चले जाएंगे. ठीक है, nothing rocket science, no rocket science. अब based on your operating system, आप you click on the link, either Windows, Mac और Linux में से जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज ज़्यादातर होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, तो आप विंडोज़ यूज़ करेंगे. ठीक है, और आपके पास लिनक्स या मैक है, आप उस पर क्लिक करेंगे. दिस इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. सो आपने मैक पे क्लिक कर लिया, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, विंडोज़ पे क्लिक कर लिया, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा. तो उसके बाद आपने उसको डाउनलोड होने के बाद, अब जब वो फिर उस पर क्लिक करेंगे आप, देन द इंस्टॉलेशन फेज बिगिंस. व्हेन द डाउनलोड इज कंप्लीटेड फ्रॉम हियर, व्हेन यू क्लिक ऑन दैट फाइल, द इंस्टॉलेशन स्टार्ट्स, and then you just click next on every stage. You don't need to alter any configuration or any setting. ठीक है ना, just click next and it will be installed on your PC fine. If you have, I think you might be using PC and you should be aware of this. You will not face any difficulty there. So आपने बस next करना है. जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसको ओपन करके फिर जब वो प्रोसेस चलेगा सेटअप का, वो इंस्टॉलेशन होकर आती है, तो अब नेक्स्ट क्लिक कर देंगे और कोई सेटिंग को चेंज नहीं करिएगा, वो आप सब वैसे ही रहने देंगे और वो इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद हाउ यू कंफर्म कि इफ इट इज इंस्टॉल्ड और नॉट, यू जस्ट नीड टू ट्राई. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर माय कंसोल. ओके, you just need to try this command, write this command. Okay, this means my git is installed but I entered the wrong command. मैंने कमांड गलत डाल दी है, लेकिन मुझे कंफर्म अभी भी हो गया कि git मेरे पास इंस्टॉल्ड है. It is telling me that unknown option -v, you can write dash version. So if I write this, it will tell me the version of it. तो मैं अगर ये कमांड सही कर दूं, मुझे git का वर्जन इसने बता दिया कि इंस्टॉल्ड है. तो मतलब कि यार ठीक है, अगर मैं ये लिख देता तो command not found. So it is not giving something like command not found, which means this is not something that I have in my PC, but this is something that I have in my PC. It gave me an error, but it was not like a command not found. It gave me that I passed this option wrong. So I hope it makes sense. कि मतलब ये डी जो है हमारे पास काम हो गया. ठीक है, तो इसमें हमने इससे भी हमारा मुझे पता चल गया था गेट तो इंस्टॉल हो गया. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम स्टेप होगा. अगर आपके पीसी में अभी तक आपने गेट नहीं किया तो ये अक्सर लोग स्टेप मिस कर देते हैं. बताना आपने क्या करना है भाईजान, कि इसको मैं खैर एडिट कर लेता हूँ. ठीक है, गिट डैश भी नहीं चलेगा, गिट डैश वर्जन नहीं चलेगा. और फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, आपके बाद आपने क्या करना है, एक यूजर नेम और ईमेल सेट करनी पड़ती है, कमांड्स चलानी पड़ती हैं. तो फर्स्ट टाइम के लिए अगर आप नहीं सेट करेंगे, आप डायरेक्ट आगे का काम शुरू कर देंगे ना एड कमिट, तो वहाँ आपको एरर दे देगा वो. ठीक है ना, तो वो इतना बड़ा ये लाइन लिख के देगा, आपको पता चल जाएगा कि यार ये मैंने लाइन नहीं चलाई. तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने चलाई हुई है, तो मैं ये लाइन पूरी नहीं चलाऊंगा. देखें, ये पूरी जो है मैं नहीं चलाऊंगा, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ये. लेट मी क्लियर इट अगेन, एंड आई विल नॉट रन दिस कमांड कंप्लीटली बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रन इट. ओके, बट यू विल इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. अगर आप पहली बार कर रहे हैं गेट, तो आप करेंगे. आई विल रन दिस कमांड इंस्टेड. मैं सिर्फ इतनी कमांड चलाऊंगा एंड इट विल sorry there is this issue with this command. It has to be global user.email. So it is telling me what is user.email.
ठीक है ना. So the correct command is this. Let me copy this. I will update my article, update the command in the article. Okay, and similarly here as well. In instead of running this whole command, you will run this whole command. You will run this whole command, and I hope that you already know that you will not write my name, you will write your name here. Okay, तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, my name ही लिख के रह देना, या जैसे मैं वैसे यहाँ पे लिख के मैं एंटर कर सकता हूँ, लेकिन मैं एंटर नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक बार कमांड चला चुका हूँ. लेकिन मैं आपको एक दूसरी कमांड बता देता हूँ, आप ये भी रन करके देखेंगे तो मुझे नाम बता रहा है कि क्या सेट है ऑलरेडी, तो मैं पहले चला चुका हूँ, आ रहा है. आपने नहीं होगा तो नहीं आएगा, तो आपने ये 2 कमांड चलानी है. ठीक है, उसके बाद नाउ मूविंग फॉरवर्ड, methods of using Git, CLI or non-CLI. ठीक है ना, there are 2 methods, 2 main categories of 2 ways of using Git. One is using CLI method and one is non-CLI method. CLI method is only one way, and then in non-CLI methods there are multiple ways of using it. ठीक है ना, of using GUI. So यानी कि Git को यूज करने के ना 2 तरीके हैं. एक तो CLI के थ्रू कर लो, कमांड लाइन के थ्रू चला लो. ठीक है, दूसरा है आप उसे स्मार्टली यूज कर लो किसी ना किसी GUI के थ्रू. ठीक है. जी सादिया, आप कह रहे हैं आपका उर्दू में पढ़ाने का बहुत ही यूनिक स्टाइल है, बहुत मजा आता है, प्लीज गो विद इट. अच्छा रिक्वेस्ट जी. ओके, अच्छी कमेंट थी. यूजुअली पढ़ता नहीं हूँ लेकिन तारीफ हो रही थी तो मैंने पढ़ ली. ठीक है, अच्छा ओके. अब इसके बाद हम आगे चलते हैं. नाउ सी, अब CLI मेथड भी है, नॉन CLI मेथड भी है. सॉरी टू डिस्ट्रैक्ट यू गाइस. ओके, कमिंग बैक. तो अब नॉन CLI में क्या है ना कि मल्टीपल वेज हैं गिट को यूज करने के. अब वो क्या होता है, GUI मेथड, GUI कह लो या यूजर इंटरफेस कह लो, इंटरैक्टिव वे में कह लो, यानी कि यूजर फ्रेंडली वे में कह लो. कि CLI का जो मेथड होते हैं ये यूजर फ्रेंडली नहीं होते. जहां CLI आ जाए आप समझे वो यूजर फ्रेंडली वाले मेथड नहीं है, वो डेवलपर मोड में आप चले गए. आपको आना वो भी चाहिए, वो उस पर हम आगे बात करेंगे. CLI मेथड भी हम सीखेंगे. ठीक है, और नॉन CLI मेथड क्या है कि आप GUI के थ्रू, किसी इंटरफेस के थ्रू, UI के थ्रू करो, जैसे VS कोड पे भी हम करके देखेंगे. आप मेरी वीडियो एक बार फिर देखेंगे ना तो आपको मेरी बातें ज्यादा क्लियर होंगी. ठीक है ना, IT में ये बड़ा एक डिलेमा है, बड़ी जबरदस्त सी टिप मैं आपको अगर दूं ना कि एक वीडियो आप 2 बार दिखा दें. कोई भी एक लेक्चर है, मेरा एक सेशन आप देख रहे हैं, आप उसको फिर यूट्यूब पे एक बार देखें तो फिर आपको समझ आएगी मैं कहना क्या चाह रहा था, कि आप पूरा फ्लो एंड तक दिख चुके होंगे. कनेक्ट डॉट्स कनेक्ट होते हैं, हमेशा डॉट्स कनेक्ट, या आप कभी भी आप देखते रहेगा IT में हमेशा ऐसा आपको लगेगा कि यार पीछे से डॉट्स कनेक्ट हो गए हैं, पीछे का हम कुछ छोड़ दिया था, मिस हो गया था, वो हमें अब समझ में आया. ये मेरी 1 टिप है which you can utilize in all of your software development career. ठीक है. So what I shared just now is that the only tip if I give you to improve that will help you in your whole software engineering career is that, like if I am doing this session, you have to watch it again one more time at least. So because then you will be able to understand me better what I was saying earlier that you were not able to grab earlier during the session. Okay, you will see that this is a cycle. This is always a cycle that connects, that you will see that the dots are connecting. You will see that initial concept that you missed, you will be able to understand them, you will be able to grasp them. Okay, and then you will become a better developer. Okay, now there are multiple ways VS Code, so GitHub Desktop, and everybody has their own preferences. I will go with the VS Code version. Okay, but the CLI version is there. You have to know it, you cannot ignore it, you will know it, and it is common for every developer. And then there is the optional, then some people use GitHub Desktop, some people use Source, and some people use VS Code. ठीक है, अच्छा. उसके बाद then moving forward, so we will be going with the VS Code version. You will definitely learn CLI method of using Git so that you know how Git actually works. As I mentioned, same thing. Okay, Git हम CLI method हम लाजमी use करेंगे. We will go with the VS Code. All non-CLI method use CLI internally. अच्छा, मजे की बात, now what this point is saying there is that VS Code, Source, and GitHub Desktop, that all these non-CLI methods are also using CLI internally. ठीक है, they are also actually running those commands on behalf of you. यानी कि ये भी वही कमांड रन करेंगे जो CLI के थ्रू कमांड हम रन कर रहे हैं, उसमें हम बटन दिए होंगे, वो बटन के थ्रू वो कमांड रन हो रही होगी. That's it. So the main difference between CLI and non-CLI is CLI, the non-CLI methods have buttons which we click, they run the commands internally themselves, the same commands that we run in CLI method, CLI. Okay, but they make it user friendly so we can non-CLI. So okay, I hope it is clear.
I hope it is clear. If it is not, it will be clear and at the conclusion at the end. Okay, don't worry about it. Learning first command git init. So much theory we have covered, so much theory we have covered so far. I hope it is clear with you. If there is any question, you can ask me, and otherwise we can move forward. Any questions? कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना हम काम start करते हैं. Theory is most important in IT. People say that just jump into the code, start writing code. No, code is extremely important, but the theory is equally important as well, if not more. Okay, यानी कि थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कोडिंग इंपॉर्टेंट है. कोडिंग तो आपने करनी है, या तो अक्सर लोग आइदर गो विद द थ्योरी और विद द कोडिंग. तो सुनते रहेंगे कोडिंग नहीं करेंगे, या कोडिंग तो बोलेंगे जंप कर जाओ, थ्योरी पता भी ना, कमांड बताते जाओ क्या चलानी है, चला लूंगा मैं. नो, यू हैव टू नो व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड ऑफ एवरी कमांड. What are you writing and what's the outcome? Sometimes I will ask you that don't worry about what is it's doing, just run it as a beginner. But sometimes I prefer that you know almost 80 to 90% commands that you are writing, why you are writing them. Okay, so this is another tip. Sometimes it is okay that you don't bother about what that command does. You just need to know 70-80% of the commands you write. Sometimes you have to just go with the flow. ठीक है ना. तो मैंने अब क्या कहा है कि दूसरी टिप मैंने आपको क्या दी है कि समटाइम्स आपको कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ कमांड आप रन कर देते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है यार वो क्या कर रही है, लेकिन 80 to 90% टाइम आपने को पता होना चाहिए कि क्या कमांड वो करिए. तो अक्सर लोग ये करते हैं कि उनकी आदत यही होती है कि वो कमांड बताते हो चलाते हैं. प्रोजेक्ट बनना चाहिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए. और ना ऐसा होना चाहिए कि आप हर कमांड के पीछे आप टेंशन ले लेंगे वो कैसे चल रही है. समटाइम्स यू हैव टू गो विद द फ्लो. आपको बस चलाना है. अगर डेवलपर ने चला दी है, हमने कोई ट्यूटोरियल वगैरह चला दी तो चला दें, वो अभी बिगिनर लेवल पे आपको समझ आने वाली नहीं होती है, आपको बाद में आ जाएगी. ठीक है, मे बी जब उसके एडवांस टॉपिक करेंगे आपको पता चलेगा आपने पहले क्यों किया था. तो ये कमिंग इट्स लिंक बैक टू माय टिप नंबर 1 कि उस सारा साइकिल वाला सीन है. ठीक है, ओके. Using git status, CLI, git init. Let's start working on git init. So let's start by creating a new project. Okay, cd git session. Sorry, there is no such repo. I will create it. Make dir git session. Make dir वाली command आपके पास will not work on Windows. You have to create by right clicking on new folder and whatever you do on Windows, and then we can do git session, and then we can simply do go dot. Okay, we are here. Okay, so and we are on terminal. We have opened terminal here as well. Terminal, command prompt, PowerShell, anything you want to use you can. And interestingly also, when you downloaded git, initially I told you would download and install, you will also have git bash in your installed on your PC. You can use that as well. Okay, so and in that case make dir will start working. That's a tip. If you want make dir to work on Windows, you can use git bash terminal. That will be installed after you have installed git on your PC. यानी कि टू पुट इट इन उर्दू, अगर आपने जब गिट डाउनलोड कर लिया था आपके पास एक टर्मिनल भी डाउनलोड हो जाता है गिट बैश करके. आप स्टार्ट में जाके सर्च लिखना शुरू करेंगे गिट बैश, वो आ जाएगा. आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, उसमें मेक डिर की कमांड, ls की कमांड, टच की कमांड चलने लग जाएंगी जो लिनक्स और मैक में चलती हैं. दिस कमांड विच वर्क ऑन लिनक्स एंड मैक, टच, ls, make dir will start working on Windows as well. So git bash is a powerful CLI command line, so you can try that out. Okay, so or if you want to stick with this terminal of the VS Code terminal, you may find yes, git bash option in the terminal drop-down as well on VS Code as well. Okay, so moving forward. Okay, git init. So what is git init? I will tell you two methods for both, for using CLI and non-CLI method. Command the CLI way is git init, so we will do git init. So if we do not do git init, you come to this tab. It says source control. ठीक है, you the third on VS Code, and you see this some text and this initialize repo button and publish to GitHub button. Don't worry what is written over here. Just see the magic if I run this command git init. Okay, what the magic has happened? Which magic happened? क्या हुआ मेरा ये git init करने से? वो जो थर्ड जब मैं थर्ड पे गया था, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा रहा था बटन से क्या आ रहे थे, वो सब गायब हो गए. And now there is something just a message box here. There's no such text and initialize repo button, and it has initialized empty git repository in this project, in this directory folder. Directory बोलूं folder बोलूं एक ही बात है भाई, ठीक है ना. I hope it is clear, it's not confusing. उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें हमने ये प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर दिया है git init करने के बाद. अब हम यहाँ पे कमांड चला सकते हैं git status.
ठीक है, गेट इनिट ने क्या किया, उसने बोला, सॉरी, गेट इनिट ने बेसिकली हमने बता दिया कि अब ये प्रोजेक्ट गिट के हाथों चढ़ गया है, अब ये गिट के थ्रू कंट्रोल होगा। गेट इनिट ने सिर्फ इतना सा कहा है, ठीक है ना। सो व्हाट गेट इनिट डिड, गेट इनिट जस्ट give the notification and just announced, just declared okay, now this project is going to be version controlled by Git. ठीक है, so now, and what does Git status does? Git status tells us what the current status of your directory is. Simple as that, it's pretty straightforward. Init means initialization, status means it's the status of your repo. सो इनिशियलाइज हमने कर दिया रेपो को कि हमने गिट के थ्रू करना है। स्टेटस हमने देख लिया कि स्टेटस क्या है, तो हमने देख लिया स्टेटस बता रहा है नो कमिट्स येट, नथिंग टू कमिट, डोंट वरी अबाउट दिस। बस इसका मतलब ये है कि व्हेन यू सी नो कमिट्स येट मींस अभी देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। Okay, now let's see what if we create a new file here. Let's create an index.html file and let's create simple markup. Okay, we will not run this command. Let's even in fact delete this. Now what is wrong with you? Come on, stop giving me warnings. Let's use this snippet. That's it. Okay, बस ये HTML:5 लिख के आगे कुछ भी लिख सकते हैं हम, we don't bother, we don't worry about it. आपने एक फाइल बना ली। अब यहाँ पर अब दो चीजें, अब मैं आपको CLI वर्सेस नॉन CLI, CLI मेथड, व्हाट इज द CLI मेथड? नाउ यू रन द गेट स्टेटस कमांड, ठीक है ना। अब CLI मेथड के थ्रू मैं गेट स्टेटस के बताता हूँ क्या चेंज हुआ है, what's the difference in get status now. Let's see. Okay, there is index.html, the file that we created, it's showing here and it is in red color. Okay, notice this red color now, ठीक है ना। So this is the CLI output of get status. What is the non CLI output? What is the non CLI way? What is the VS Code way? Okay, let's go to this tab. Okay, so there is this index.html showing up already over here. Okay, so now you see what has happened. This file is started appearing here, and when you click over it, you see this green color, green. These files are in green, means something is added. I will come to this green part later on. Now what I want to tell you is, let's go back to our article. We learned about git init, we saw git init, we may be not sure about what git init does, we may not be sure about what git status does. Don't worry, you will understand. अभी आपको समझ नहीं आ रहा है क्या कर रही है कमांड, समझ आ जाएंगी। ऐड एंड कमिट, ठीक है ना। ऐड और कमिट क्या करती हैं? ऐड और कमिट अपने ऐड, अभी अब हम देखते हैं कि ऐड क्या करता है, ठीक है। ऐड और कमिट से पहले मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ, या पहले हम ऐड करना देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट ऐड डज। नाउ इफ I write this command git add dot, so it will add this all the files in staging, ठीक है ना। Right now these are in untracked, and after doing this these will be added in staging. Untracked is equal to changes on VS Code, ठीक है। जो untracked में जो फाइल्स आ रही होती हैं वो यहाँ पे VS Code में changes में आ रही होती हैं। If I run this command, just see what happens now. If I run git status, the non CLI way, you can see immediately on the left, this file was in changes, now this has moved to staging, stage changes. And if the same thing, अगर मैं staging और stage कहूँ, ये फाइल चेंजेस से उठ के ऊपर चली गई है, जो मैंने सिर्फ एक ऐड डॉट चलाया है, ऐड किया है। स्टेटस में करता हूँ, अब नॉन CLI मेथड से आपने देख लिया, अब CLI मेथड से स्टेटस करके देख लें। This file shows here the same index.html file, but it is in green now and changes to be committed. So basically the green means that they are in a staging stage, staging state. अब ये हमारे पास स्टेज हो गई। अगर मैं यहाँ पे एक और index2.html ऐड करता हूँ तो क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ, सो यू कैन सी दिस इज इन चेंजेस, दिस इज नॉट इन स्टेजिंग, ठीक है ना। एंड इफ आई रन द कमांड लाइन, यू कैन सी दिस न्यू फाइल इज इन रेड एंड दिस इज इन ग्रीन। नाउ इट मेक्स सेंस, इट शुड मेक सेंस। अभी आपको मेक सेंस करना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि हुआ क्या। जब पहली बार आप फाइल ऐड करेंगे तो वो चेंजेस में आएगी, जब उसको आप ऐड कर देंगे, स्टेज करेंगे, तो वो ऊपर चली जाएगी। इज इट क्लियर that first every file will be added in changes, when you add it, it will go into stage. Now if I run git add dot, what happens is this file again goes into staging. Okay, now if I add another file, now do it non CLI way, index 3.html. Let me write this, and now we are doing it non CLI way. It is showing here, if I do git status, 2 files are green, 1 file is red, all good. Now instead of doing git add dot,
what I'm going to do is git add non-CLI way, not git add dot. I will do plus. I will click on plus. There is this tooltip stage changes. Okay, the small black it's tooltip that says ये छोटा सा black में आपको नजर आ रहा है tooltip stage changes. Now if I click on plus, so it is now moved to stage changes. Now if I click on get status, you can see on the left directly what's going to be here. It's going to be 3 red files. All good. There is one more way to add into staging. One more way. Okay. Index4.html. Now, if we want to add this into staging, sorry, let me close all files. Now, if I want to add this into staging, मुझे इसको staging में लेके जाना है. Again, मैं git add dot भी कर सकता हूँ, या मैं फाइल का नाम भी लिख सकता हूँ. Git and add index4.html. All good. So now this has also moved to staging, and if I run git status, now 4 files are showing in green. All good. Okay. Now I have shown you multiple methods of adding into staging. Staging is just a layer, just a stage. You can say a stop. One stop is changes, then another stop is staging, then another stop is committing, and the final stop is pushing on GitHub. So we have covered the untracked part, the changes part. हमने untracked और changes वाली stage देख ली. पहले कोड यहाँ होता है. Then we added, फिर in the add command it moves to staging. जब हम add करते हैं तो वो staging के state में आता है, stage changes में आता है. ठीक है. Then we commit them, which we are going to study in a while. फिर हम commit करेंगे, वो भी हम देखेंगे, तो वो एक तीसरी जगह पे move हो जाता है, समझ लें. तीसरा state है. अभी तक वो it hasn't reached GitHub yet. When we commit, it is not reached GitHub. We run the push command. It goes to final stage, which is going to GitHub. एक push की command हम आखिरी में पढ़ेंगे, तो तब वो GitHub पे जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा. ठीक है. तो हम एक इसको उससे भी देख लेते हैं, एक डायग्राम के थ्रू, which if I can find it, okay, I hope it makes sense. पहले untracked changes हैं, जो कि untracked changes में आ रहे हैं, जो red में शो कर रही होती हैं, changes में शो कर रही होती हैं on VS Code. Then you add, click on add, so it will move to stage. Then you stage state, ठीक है ना, which is this one, staged. This is untracked. Changes are untracked. This is untracked stage. Then you click after add, it moves to stage state. Okay, stage state, and then to git commit, we will study. It will move to local repository, and then you will run git push. It will go to remote repository. Remote repository, by remote repository I mean to GitHub. Okay, remote repository. We will come to that later on. Now we can similarly move them back. Okay, it has come back. Index 4 is moved back. Now if I run git status, now 3 files are gained, 1 is red. If I unstage this as well, 2 green 2 red. All good. किसी को कोई मसला नहीं. अब सारी एक साथ भी commit करनी है, तो please show the diagram again. Any question in this diagram? First untracked changes, these files are in staged. When I do git add, these are untracked state, these are in changes. When I run git add, the files go to stage changes. Now let's do a quiz. You tell me at this moment which files are in untracked stage. इस वक्त untracked stage में कौन-कौन सी files हैं इनमें से? दो है सर. इसमें फाइल इंडेक्स 3 फाइल जो है वो भी अनस्टेज है, और इंडेक्स 4 भी, ये दोनों अनट्रैक्ड फाइल है. और इंडेक्स और इंडेक्स 2 जो है ये दोनों स्टेज्ड फाइल है. कौन-कौन सी स्टेज ने? index.html and index2.html. बिल्कुल ठीक है. किसी को कोई ऑब्जेक्शन ये समझ आया कि इस वक्त हमारे पास ये जो 2 फाइल्स हैं ये अनट्रैक्ड स्टेज में हैं, ये वाली ट्रैक या स्टेज में, ठीक है, ये स्टेज में चली गई हैं ये 2 फाइल. ओके, उसके अलावा क्वेश्चन, ओके गो अहेड. ये दरमियान में इन्होंने इतना क्यों बनाया कि लाइक व्हाट्स द पर्पस ऑफ स्टेज चेंजेस? जब हम नेक्स्ट में कमिट करते हैं तो कमिट में और ये स्टेज चेंजेस में क्या डिफरेंस है? यू विल लव इट. फर्स्ट इट लुक्स लाइक ये हमने एक बिला वजह की लेयर डाल दी है कि यही होता है, मुझे भी शुरू में लगा था, लेकिन यू विल लव इट कि ये फीचर बड़ा काम का है. 2 लेयर्स बनाई हुई है इन्होंने, इससे हम फिर हमारी वर्जन कंट्रोलिंग, हमारा काम करना आसान हो जाता है. इसका फायदा क्या है हम देख लेंगे अब, ठीक है ना. थोड़ा सा ये अजीब लगता है शुरू में, लेकिन बाद में यू विल लव इट. ओके, अच्छा, moving forward now, index 3 up. Now let's move all these files at once. So you see what is the difference between writing add index3.html and git add dot. ठीक है ना. If I do git add dot, what will happen now? Git add dot,
इट विल मूव बोथ ऑफ दीज फाइल्स इन स्टेजिंग, ठीक है ना। गेट डॉट का मतलब होता है इस वगैरह में जितनी भी फाइल है सबको स्टेज कर दो जो अनस्टेज है। सो अब मैं इंडेक्स 3 डॉट लिखूंगा ना खाली, तो वो खाली इंडेक्स 3 जाएगी। अगर मैं डॉट कर दूंगा तो सारी फाइल चली जाएंगी। अब क्लियर है ये, गिटर डॉट किया तो दोनों फाइल्स उठ के चली गई। ये दोनों डिफरेंस भी इट शुड बी क्लियर बाय नाउ। अब मैं क्या करता हूँ, गिटर डॉट करके दोनों चली गई। अब मैं आपको एक और मैजिक दिखाता हूँ, इसका क्या फायदा है। अभी तक सिर्फ इतने से ही चीज का बड़े फायदा है, ठीक है ना। आगे तो हम बाद में बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ, बॉडी में लिखता हूँ हेलो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, hello from index.html. Now if I come here, now git status ka we will see git status output as well. You can see the non CLI, the UI which UI पे इसमें क्या हो रहा है कि चेंजेस में एक चेंज आ रहा है index.html के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी पावर आपको पता चलेगी। मैं index.html पे क्लिक करता हूँ, अब देखें क्या हुआ है। कैन यू सी द एडवांटेज, कैन यू सी द पावर ऑफ गिट, ठीक है। अब आपको क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि ये रेड में जो चीज है ये पिछले वाली फाइल है, ये नई वाली फाइल है। रेड का काम ये है कि ये रेड वाला बता रहा है कि चीज हटी है, ग्रीन वाला बता रहा है ये चीज ऐड हुई है। लेट्स क्लोज दिस एंड गो हियर एंड राइट अनदर न्यू लाइन एंड सेव इट। वाओ, उसने वो प्रिटियर हुआ तो उसने वो लाइन ही उड़ा दी, ठीक है। आई हैव एडेड br एंड अनदर न्यू लाइन, ओके। नाउ लेट्स गो, नाउ क्लिक हियर, नाउ सी दिस वाज द प्रीवियस फाइल hello world, now in this file this part is changed and this line is whole new line is added and this whole new line is added because this is in green. तो ये रेड और ग्रीन के थ्रू हमें चेंजेस बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है। यहाँ से हमें पता चलता है CLI की कमांड है git diff की। there is a command called git diff and we can write index.html and now you can see the output. यही जो काम है ये कमांड लाइन के थ्रू कैसे होता है। you can see this line says in red and this says minus, this is subtracted and these lines are added which are in green, okay. So this is the git diff command which you can use on Mac or plain Windows or whatever. So but you don't have to, you have to try out both the GUI way this way and the command line way. All good. Now you see index.html is same. It said that initially this was a content and now it has this content. You can, if you can move these files up and down and you can see what is happening. Now you can play it around on your own. Now moving, let's see what next topic we have. Add commit, we have a commit stage as well, okay. We have covered check picture, add and track stage using CLI and using diff, okay, this is covered. Now we can try out commit as well, okay. Now let's commit our code. What happens if we commit? For committing, we the CLI way, let's go with CLI way. This is the command git commit, we are about to commit, and dash m is like, this is the message. What is the message? My first commit. This is, you can type any message, whatever you have done. For example, this is our first commit, we just say my first commit and we do enter. There is one interesting thing to note, that I have these 4 files in staging and one file is updated. So when we commit, the files in stage area will be committed. यानी कि अब हम commit की कमांड चलाने वाले, तो जो स्टेजिंग में पड़ी है ना, खाली वो फाइल कमिट होती है, वो फाइल हमारी यहाँ से आगे जब बढ़ेंगी अगले लेयर पे जाएंगी, ये यही पड़ी रहेगी। तो आई होप इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं चला के दिखाया। तो या मैं इसको जो है ना डिस्कार्ड करता हूँ, डिस्कार्ड, देखिए मैं इसको यहाँ से डिस्कार्ड कर दूंगा ना, मैं चेंज हटा दूंगा, तो इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए डिस्कार्ड चेंज लिखा, डिस्कार्ड कर दिया मैंने, सॉरी कैंसिल हो गया, डिस्कार्ड कर दिया मैंने तो चला गया। अब नाउ माय index.html इज बैक टू हेलो वर्ल्ड, इज बैक वेयर इट वाज। तो ये फायदा भी होगा गिट ऐड का स्टेजिंग का। मैं बंद कर देता हूँ। चलिए मैं कमिट चला रहा हूँ तो मेरी सारी चारों फाइल्स जो हैं ये सारी अगले स्टेज पे चली जाएंगी, कमिटिंग वाले स्टेज पे। सिंपली आपने गेट कमिट लिखना है, डैश एम लिखना है, मैं मैसेज किया आप एंटर कर देंगे। उप्स, सिंटेक्स एरर, सॉरी, डबल कोट कहाँ से आ गई जी। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप पूछ रही हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, दैट्स इट। कमिट हो गई हैं, दीज फाइल्स आर कमिटेड नाउ। वेयर आर दे आर ऑन अ नेक्स्ट लेयर, ठीक है ना। आर दे ऑन गिटहब, क्या ये गिटहब पे अपलोड हो गई हैं, यस या नो? क्या ये गिटहब पे अपलोड हो गई हैं? नो सर, नो वी हैवंट पुश दैट। सही है, पुश नहीं किया है अभी हमने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एज पर डायग्राम हमने कमिट करके लोकल रेपोजिटरी में आ गई है। देयर इज लोकल रेपोजिटरी एंड देयर इज रिमोट रेपोजिटरी। लोकल रेपोजिटरी मींस कि ये हमें लोकल रेपोजिटरी में आ गई है, ये हमारे पास यहाँ शो कर देंगे। ये यहाँ पे माय फर्स्ट कमिट है, ये टैब अगर आप ओपन करें मिल जाएगा। आप एक एक्सटेंशन है गिट लेंस की, ये मैंने करी हुई है, आई होप, हाँ ये वाली है, ये आप कर लिया गिट लेंस। तो फिर आपके पास ना ये एक्स्ट्रा जो टैब्स है ना ये आना शुरू हो जाएंगे, वरना नहीं शुरू होंगे, ठीक है ना। तो कमिट में यहाँ पे दिखा रहा है माय फर्स्ट कमिट आ गई। अब इफ यू रन गिट स्टेटस देयर इज नथिंग ओवर हियर,
working directory tree clean, there is nothing to add. They are committed. Commit क्या होता है? Commitment जो dating में यूज किया जाता है, commitment है, वही वाला commit है, मतलब वादा कर लिया है कि ये काम हो करना है या वही काम होगा. So these files are now committed, now saved, recorded. They are now recorded state. ठीक है. जब ऐड और स्टेजिंग वाले चेंजेस वाले स्टेज में होती है ना, वो आप करें चेंज करें, वो आपका ट्रैक, आप उसे एंटर कर सकते हैं. ये कमिट हो गई है, अब ये आपके पास एक लग गई है, एक लेयर बन गई है कि ये काम तो हुआ था. ठीक है ना. तो ये सीन है. तो ये कमिट बन गई है आपकी, लेकिन अभी तक गिटहब पे नहीं गई है. तो गिटहब पे भी हम ले जा सकते हैं. उससे पहले हम एक कमिट के बजाय एक और कमिट भी करते हैं. ठीक है. अब एक और कमिट कैसे करेंगे? हम कुछ और चेंज करते हैं और इसके साथ खेल के कोड के साथ थोड़ा खेलते हैं. हेलो वर्ल्ड फ्रॉम index 2. अब मैं इसे सेव करता हूँ. What will be the output of git status? It is going to show me index2.html in red, and on the UI it's going to show me in changes. And if I do git add dot, it will move into stage. No rocket science. ठीक है. If I do git diff index2.html, तो कोई diff नहीं आ रही. ठीक है, क्योंकि वो मेरी स्टेजिंग में. इसको मैं माइनस कर लूँ, एंड इफ आई रन git diff index2 and then it shows me the difference. Okay, but now ये मेरी यहाँ पे प्लस कर दूँ, स्टेजिंग में चली गई सिमिलर वे, और यहाँ से मैं अब इसको देखूंगा ना तो फिर से मुझे बता देगा कि चेंजेस और स्टेजिंग में कितना डिफरेंस आया. तो दैट इज स्मार्ट, दैट इज ईजी. यहाँ पे क्लिक करना आसान है, कमांड लिखना आसान है. तो ये करना आसान है यूआई वाला, लेकिन कमांड भी आपने चलानी है, सारी की सारी कमांड भी आपको आनी चाहिए. तो ये डिफरेंस हमने देख लिया, डिफ देख लिया. अब इसको भी कमिट करते हैं, तो यहाँ पे हमें कमिट्स में शो करने लगेगा. अभी मुझे इसको भी कमिट करना है. हमने नॉन CLI मेथड देख लिया था, अब नॉन CLI मेथड देख लेते हैं. अब वो जो मैसेज था मैं यहाँ लिखूंगा माय सेकंड कमिट. ठीक है, माय सेकंड कमिट लिख के आप कमिट कर देंगे. कमिट हो गया, सही है. वो यहाँ पे अब शो करेगा. माय फर्स्ट कमिट के बाद माय सेकंड कमिट उसके ऊपर आ गई है. ठीक है. तो ये मेरे पास लोकल रेपोजिटरी में मेंटेन हो गया. दो बातें तो डन हो गई हैं, कमिटमेंट चली गई हैं, 2 कमिटमेंट हो गई हैं. सही है, लेकिन ये गिटहब पे अभी तक नहीं गई है. सही है. तो अब ये गिटहब के ऊपर कैसे जाएगा भाई? गिटहब के ऊपर जाने के लिए अब ये हमारे पास कमांड तो सामने लिखी है हमने. गिट ऐड देख लिया, स्टेजिंग में गिट कमिट देख लिया, लोकल में आ चुका है, कमिटमेंट हो चुकी है. गिट पुश से वो सारी कमिटमेंट्स पुश पे भी, वहाँ पे भी पब्लिकली हम दिखा देंगे सबको के गिटहब के ऊपर के यार ये कमिटमेंट हो चुकी है, या रिकॉर्ड हमारा चला गया. ठीक है, अपडेटेड. तो ये सीन होता है. अब क्या करेंगे हम? सर जी बोले. सर आई हैव अ क्वेश्चन बिफोर पुशिंग इट टू गिट, कि अगर हमने कोई फाइल है वो कमिट कर दी है या वो स्टेज मतलब स्टेज पे चली गई है, स्टेज है, तो हम उनको अगर दोबारा डिलीट करना चाहें या उनको ऑन ट्रैक में लाना चाहें तो ला सकते हैं? जी बिल्कुल, वो अभी तो हमने किया था ना. ये देखें, ये हमारे पास अगर ये अभी अनट्रैक में है, इसको मैंने ट्रैक में कर दिया, स्टेजिंग में माइनस करके अंदर आ गया, नीचे आ गया, अभी तक कमिट नहीं हुई. ये आप खेलते रहे, डजंट मैटर. ओके, अगर कमिट हुई है तो फिर भी आ जाएगी? कमिट होने के बाद नहीं, कमिट हो गई है, नाउ यू कैन नॉट मूव बैक. एज अ बिगिनर यू अपने यही समझना है, कमिट होने के बाद वो वापस नहीं आती. कमिटमेंट का मतलब यही आप समझिए कि अब वो वापस नहीं आ सकती. तो ये डिफरेंस है कमिटमेंट का. सही है. तो ये अभी तक आप यही समझेंगे, कमिटमेंट होने वाली चीज वापस नहीं हो सकती एज अ बिगिनर. ठीक है. कुछ लोग होशियार होते हैं, कमिटमेंट करके भी 2 नंबर ही करते हैं ना, तो वो काम भी है, लेकिन वो एडवांस लेवल पे आएगा, अभी नहीं करना आपने. तो भैया समझे, कमिटमेंट जो हो गई है वो वापस नहीं हो सकती. ठीक है. अब हमें क्या करना है? अब हम मूविंग फॉरवर्ड. Sir, I have a question. Go ahead. Can I ask? Can we use git command after pushing? Will it show the difference in Visual Studio Code also? If we push the code, after we push the code? Yeah, if you push the, yeah. Yes, we will see how can we check on VS Code. We will come to that. Okay. वो भी देखेंगे. ठीक है. Okay. अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं जी, इंडेक्स 2 आ गई हमारे पास. अब हमने अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं. अगला क्या टॉपिक है हमारा? यूजिंग diff कर लिया, add and commit. We saw that no both CLI non-CLI way. Now we want to push it now on GitHub. So before pushing on GitHub, we need to have an account on GitHub. हमारा GitHub के ऊपर अकाउंट होना चाहिए. हम चले जाएंगे जी github.com के ऊपर. मेरा तो लॉगिन हुआ हुआ है, तो मेरा यहाँ पे लॉगिन दिखाएगा. सो अगर मैं इनकॉग्निटो में चला जाऊँ, तो आपको पता होगा कि इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन कुछ नहीं होते, लॉग आउट वेब होते हैं. सो यू विल गो टू साइन अप and you can create your account. Here enter your email, you can enter your email, your password जो भी है. इसका थोड़ा सा फैंसी है. This is fancy style of signing up. I don't like it. I want it to be simple, but they have made it fancy. I don't know.
maybe in future they will change it, and they usually, these websites get affected, so don't worry about it. Email is invalid or already taken. What? Dummy. Create a password. You set your password, maybe compromise. Continue. Dummy. It says dummy user is not available. See these messages, is not available. You can say dash is not available. You can say 123 is available. Okay, then you continue, and you have to write Y over here. Would you like to receive? Oh, sorry, you can Y or N, whatever you, if you want to receive announcement or email करेंगे ये बार-बार. अब yes no पे क्लिक कर देंगे. आप इस पे क्लिक कर देंगे dummy123@gmail पे ईमेल चली जाएगी. ठीक है, हम कंटिन्यू कर देते हैं. नहीं अभी नहीं गई. अब पजल, देयर इज अ पजल स्टेज एज वेल, सो यू हैव टू सी. यू क्लिक ऑन स्टार्ट पजल. आप स्टार्ट पजल पे क्लिक करेंगे. इसमें ये कुछ कैप्चा वाला काम है. क्लिक वन स्क्वायर दैट शोज टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. टू आइडेंटिकल ऐसी ऑब्जेक्ट कौन सी हैं जिसमें दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ही हैं? कौन सी भाई? मेरे ख्याल से ये हैं, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं. डन. एक बार हो गया, दूसरी बार फिर से पूछेगा. टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, मुझे ये दोनों सेम है, इस पिक्चर में दोनों ही सेम है. तो ये आपके टाइम पे मे बी यू गेट द सेम कैप्चा और डिफरेंट कैप्चा. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ यू कैन क्रिएट अकाउंट, देन विल सेंड यू एन ईमेल. क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ईमेल आ जाएगी, उसमें एक लिंक होगा, उस पे क्लिक करेंगे तो आप यू आर ऑल सेट टू गो. आपके पास आपका ये github.com पे यहाँ पे लॉगिन होते हुए आपको नजर आ जाएंगे ये स्क्रीन. ठीक है, कॉल कर दिया करें काइंडली. और आपको नॉइज आ रही करे तो आप लोग देख लिया करें, म्यूट कर दिया करें जिसकी भी नॉइज हो. ठीक है, अच्छा. मूविंग फॉरवर्ड, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? गिटहब पे अकाउंट बन गया हमारा. उसके बाद आपने क्या करना है, रेपो बनानी है. ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करके भी न्यू रेपोजिटरी पे क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ राइट में प्लस पे क्लिक करके न्यू रेपो पे क्लिक कर सकते हैं. न्यू रेपोजिटरी, यहाँ अब यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकते हैं. न्यू रेपोजिटरी खुद ही स्क्रीन आ जाएगी. ठीक है, मैं यहाँ वापस आता हूँ और इस पर भी क्लिक करके दिखाता हूँ आपको. तो सेम स्क्रीन पे आपको लेकर आ रहा है. उसके बाद अपनी रेपोजिटरी का नाम लिखेंगे यहाँ पे आप. ठीक है जी, अब हम रेपोजिटरी का नाम क्या रख देते हैं? गिट सेशन रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल. फर्स्ट गिट रेपो, जबकि है नहीं, फर्स्ट गिट रेपो रख लेते हैं. और ये भी टेकन वेगन हो सकता है, तो देख लेगा टेक आ रहा हो. सेम एक रेपो का नाम दोबारा आप नहीं रख सकते. फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि पहली रेपो होगी. आप क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे, कुछ भी नहीं छेड़ना. You will not change any other settings. You will just click on create repo and you will see this screen. Now there are two methods of getting your code, uploading your code on GitHub. अब GitHub पे हमें अपना कोड अपलोड करना है, तो उसमें हमारे पास ये भी मेथड है और ये. इसमें create a new repository in the command line or push an existing repository. We're going to go with this one, this option, क्योंकि we already have a repository on local machine. What is the repository? देखें, अब हमें सेकंड वाले मेथड पे जाएंगे, पहले वाले पे नहीं जाएंगे. एग्जिस्टिंग रेपो, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हमारे पास है, दैट इज अ रेपोजिटरी. एक प्रोजेक्ट ही एक रेपोजिटरी होता है. गिटहब के ऊपर भी जो सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, सारे के सारे वो सारे, आई कैन टेल यू, आई कैन शो यू, ये सारे रेपोजिटरीज ही हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स ही हैं. ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं. तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, सर से आके आप देख लें, अगर पेनावर्स के ऊपर चले जाएं हम, तो इसके अंदर देखें रेपोजिटरीज आ गई. ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, नोड.js प्रोजेक्ट्स, लर्न नेक्स्ट.js, लर्न टाइपस्क्रिप्ट, ये सब क्या है? ये सब रेपोजिटरीज हैं. ये भी एक रेपोजिटरी है. ठीक है, ये भी एक रेपोजिटरी है, ये भी एक रेपोजिटरी. इसी तरीके से आई होगी जो हम कर रहे हैं अभी. अब यहाँ पे आपका कोड आ जाएगा, इस तरीके से नजर आएगा. ठीक है, अभी तो हमारे पास क्या नजर आ रहा है, हमारे प्रोजेक्ट पे तो ये नजर आ रहा है. इस तरीके का कोड वाली फाइल अभी नहीं है. ठीक है, कैसे आएंगी अभी देख लेते हैं. हम एग्जिस्टिंग रेपो को पुश करना है, हमने पहले ये कमांड चलाएंगे, कॉपी पेस्ट करनी है अब, लेकिन पता भी हो क्या क्या चला रहे हैं थोड़ा बहुत. ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? we copy pasted this command and we're just going to click enter. ओके, इससे क्या हुआ, गेट रिमोट एट ओरिजिन, इसने एक
लोकल रेपोजिटरी और रिमोट रेपोजिटरी। लोकल यानी कि मेरे पीसी में रेपो, मेरे पीसी का प्रोजेक्ट, ये वाला सारा 4 में। और रिमोट यानी कि गिटहब के ऊपर जब प्रोजेक्ट चला जाएगा तो वो रेपो, गिटहब पे जो रेपो बनाई है वो रिमोट है, दूर दूर की है। रिमोट का मतलब दूर की। ये लोकल है यानी कि मेरे पीसी की। लोकल और रिमोट का फर्क पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये रिमोट का मैंने यूआरएल सेट किया कि रिमोट रेपो कहाँ है, ये कमांड इतना सा काम कर रही है। ये मैं क्या कर रही है भाई, यहाँ देखिएगा ये ब्रांच नेम होता है आपका। ब्रांचेस के बारे में डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मास्टर हुआ करती थी तो ये वीएस कोड ये पहले मास्टर पे बनाता है, इसको मेन पे होना चाहिए था डिफॉल्ट पे। खैर गिट ब्रांच डैश मेन पे मैं स्विच कर रहा हूँ इस कमांड से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब ब्रांचेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर आपने पुश करना है। क्या पुश से अब आपको समझ में आ गया, जो कमिट में चीजें पड़ी हैं वो पुश होंगी, ठीक है। यहाँ वाली कोई चीज ये पुश होगी, इंडेक्स 2 वाली फाइल ये पुश नहीं होगी। जो कमिट कर चुका हूं मैं चीजें, ठीक है ना, वो पुश होंगी। अगर आप मैं चलाता हूँ इनकी ये कमांड पेस्ट कर देता हूँ एंड एंटर करता हूँ, इफ आई रन दिस कमांड, द थिंग्स, द फाइल्स that are committed, we had 2 commits but they are in local pc right now as of now until I run this command. If I run this command, these commits will be pushed to GitHub, to remote repositories, from local repository, from local project, from my own PC to remote to GitHub account. That is remote. So done. Okay, now let's refresh this jargon. Just don't worry about it. It says you have successfully uploaded. ठीक है ना? Now we're just going to do a refresh and our files are uploaded. Great, all good. सही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाइल्स गिट के ऊपर सक्सेसफुली अपलोड हो गई हैं। ठीक है जी, किसी को कोई क्वेश्चन? And here you can see that it says 2 commits. Now Sir, we can create a repo from CLI. Repo from CLI, don't try that. Just go with this UI method. ठीक है ना, सिर्फ इसके थ्रू कर लें। अच्छा, ये 2 कमिट्स आप देख सकते हैं कि वो 2 कमिट्स यहाँ आ रही है, बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जी। Sir, there is one thing I want to add here. Hello. जी जी बोलें। Whenever we push the code, we must take the duplicate, I think, our code. Is it good or not? Sorry, I don't get your point. Whenever we push our code in a main branch, so I think we should take the duplicate of our code. No, we don't, no need to worry about it. So अक्सर ये कहना चाह रहे हैं कि डुप्लीकेट आप प्रोजेक्ट का कॉपी बना के रख लेते हैं कि यार अभी हम नया काम करूंगा तो वो पिछले वाला बैकअप बना रहे हैं, अब इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीख लें किट बनाए। किट का मेन पर्पस ये है कि दैट यू डोंट हैव टू मेंटेन अ कॉपी। Because sometimes we push the code, maybe there is some mistakes, and they will come there in the main branch, so it will make the problem. The whole purpose of Git is that you don't have to copy paste your project on your PC. They want to save you from, if you are doing it, so you are not using Git correctly. अगर आपको अपने पीसी में उस प्रोजेक्ट का कॉपी बना के रखनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप गिट से यूज नहीं कर रहे, तो गिट को आपको थोड़ा और लर्निंग की जरूरत है। ठीक है ना, थोड़ा और लर्न करेंगे आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गिट का काम ही यही है कि वो इसकी आपको नौबत से बचाए कि आपको जो है ना उसका प्रोजेक्ट की कॉपी बना के रखनी है। नाउ अब हम अगेन ऐड कमिट और पुश सारा वहां तक गिट तक एक बार फिर से चलाते हैं। ये मेरे पास फाइल्स पड़ी हैं। git status, if I run git status, this is again red. I will do git add dot, it moves to staged. I will do git add there my updated, इसमें मैंने किया क्या चेंज है, let me see, updated some text. Okay, enter. Now this is in commit stage. Now we can push from here as well. Pull push and push to. You select push to and select this origin. Okay, this says 1 and this is 1, and this loading has gone, which means that it has been pushed. Now if you come here, it says 2 commit, you reload it, says 3 commits updated just now, this just now। ठीक है ना, this commit is pushed just now। ये बता रहा है कि commit अभी आई है, 3 commit भी हो गई और वो लोडिंग भी रुक गई। सबको पता चला कि ये हमारी फाइल कमिट पुश हो चुकी है। ऐड स्टेज और कमिट के बाद पुश से भी सारी हमने कमांड्स देख ली। ठीक है, और ऑल गुड।
so far. We started on 9. We tried to finish it before 10, but आप लोगों को बोरिंग हो रहे हैं, सही है, अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, कोई फीडबैक, स्लो जा रहा है, तेज जा रहा है? No, sir, it's going good, sir. Good. और कोई अपडेट? It's going good and helpful. It's okay. I understand everything. Okay. Sir, I have a question, sir. Okay, And go ahead. please sir, share this video. Okay, it will be uploaded on YouTube and the link will be shared with you. Okay. Okay. Thank you. जी बोले. So question is that actually I was completing your project that you told before teachers before. So at that time इसके लिए हमें जो आपने सेकंड आपने बताया कि गिटहब पे जाके सेकंड वाला जो है ना ऑलरेडी आपकी ईमेल बनी हुई है उसको उसके थ्रू काम करेंगे हम लोग. जी अगर आपके पास गिटहब की ईमेल बनी हुई है तो आप उसी को यूज करेंगे. यस. यानी कि आई मीन टू से हम अभी हमने उसको पुश नहीं किया ना, हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया लोकल उस पे रिपोजिटरी पे वीएस कोड पे बनाया. अब हमको अब इसको पुश करने की याद आ गई, उसको पुश करना है ना. पहले तो हमने गिट के बारे में सोचा ही नहीं था, यानी कि आपको पुराने जो हमने अगर काम आपका किया ना. गिटहब का अकाउंट है तो आप वही यूज कर लें, अगर नहीं है तो आप गिटहब पे अकाउंट बनाएंगे. अकाउंट तो एक ही बार बनेगा. Sir, I have different repo published, and I want to copy all of them to the one folder. वो भी अभी हम देख लेते हैं. ऑलरेडी रेपो को आप लोकल कैसे लेकर आते हैं वो भी हम देखें. चाहिए हो not on local, sir. I want to do it on remote. Is it possible? रिमोटली चेंजेस करने हैं. Yes, sir. भी करेंगे, सब करेंगे, टेंशन नहीं. Okay, sir. Thank you. आर्टिकल में. अच्छा कहाँ गया आर्टिकल हमारा? गिरा. हमने कहाँ तक कर लिया? क्रिएट रेपो ऑन गिटहब. अब हमने रेपो हो गया. मेथड वन अपलोड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, अपलोड न्यू प्रोजेक्ट बाय क्लोनिंग रेपो फर्स्ट. अच्छा अब नाउ व्हाट द अदर वे इज वी विल नॉट यूज दैट. ठीक है ना, उसको छोड़ दें. आप यूज कर सकते हैं लेकिन हम ये वाला यूज कर लें. आपके बस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट यू कैन पुश. अब नाउ लेट्स डू पुश पुल रिमूव बिटवीन लोकल एंड रिमोट गिट. एंड let's try out now pull. What is pull? Okay, and let's see how we can edit these files on GitHub and then we pull. Why we need pull? Let's see that somebody else has changed the code online, or you are changed the code online. Let's see, we change this file index.html. Okay, so now what you will do is click on this pencil, edit it directly on GitHub. You see what is happening here, and now you will, that process is different. Just you write this commit message adding some text on GitHub directly from GitHub directly. उसके बाद आपने क्या करना है, कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच. आप कमिट आप कर देंगे, इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट अभी आप भूल जाएं. इससे डायरेक्टली आपके गिट में कमिट डायरेक्टली आ जाएंगे. सिर्फ यू राइट दिस मैसेज एंड एंटर. ऐड स्टेजिंग, सब स्टेजेस डायरेक्टली सारी कंप्लीट हो जाएंगी इस एक फाइल से. फिर अगर आप गिटहब पे चेंज करते हैं इससे सब कुछ डायरेक्टली हो जाएगा. सो नाउ इट हैज 4 कमिट्स, बट आपके लोकल में तो ये चीज़ें नहीं आई हैं. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज गेट पुल ओरिजिन मेन. इंस्टेड वी डिड गिट पुश origin main या git push dash u origin main. Now you can do git pull origin main. Now you see if you go to oops, so not in this directory, in this project, couldn't remote find remote, it does not have remote. Now you can see that in our index.html file, let's first open, it has hello world only. Now I will run git pull. अब मैं git pull origin main चलाऊंगा तो index.html की फाइल का टेक्स्ट यहाँ पे बदल जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो कमिट्स हैं, ये यहाँ पे माय फर्स्ट कमिट अपडेटेड वाला या थर्ड कमिट था कि यहाँ पे पूरा जाएगी. इसको बंद करते हैं और मैं git pull origin main चला रहा हूँ. अब इस पे लाइन पे गौर करिएगा, ये अपडेट हो जाएगी. दिस लाइन इज गोइंग टू अपडेट एडिट डायरेक्टली ऑन गिटहब. दिस कोड इज फास्ट. ओके, दिस कमिट इज फास्ट. ठीक है ना, git pull भी आपको समझ में आ गया कि कैसे होता है. नाउ यू कैन सी origin adding some text. This is also changed. Moving forward, sorry. Now
we saw the pull command, remove between, okay, push pull, local git and remove. Okay, editing files on remote GitHub, we saw that using .git ignore file. Now, I think we have completed it earlier, and I think we can wind up at 9:30 so that the video is shorter as well, so that people don't find it too lengthy. So let's cover the .git ignore file, the power of .git ignore file, because you see that a lot as well. Okay. So you asked me two questions. I guess both of those questions are दो questions मुझे थे कि अगर लोकल रिमोट एंटर करना है, और हाँ क्लोनिंग का यहाँ पे मैंने कहीं लिखा ही नहीं, क्लोनिंग का नहीं कवर किया। खैर क्लोनिंग का भी बता देता हूँ। गिट इग्नोर पहले कर लेते हैं, गिट इग्नोर क्या, फिर क्लोनिंग करते हैं। गिट इग्नोर की फाइल क्या करती है जी? अब यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है index5.html. ओके, please don't push me on GitHub. Now you see this file is appearing here. Now what we can do is we just create a file starting with the name .gitignore. Now there is one thing that I wanted to mention that I missed. It starts with dot. Okay, first of all, when you write ls, it shows these files. When you write ls-l a, it says .git folder as well. Initially it was not showing this. जब आप खाली ls करते हो या dir करते हो ना, तो आपको हिडन फाइल्स और फोल्डर नहीं दिखाता। हिडन फाइल्स और फोल्डर होते हैं जिनके शुरू में डॉट लिखा होता है। अभी आपके पास .git और .git ignore है ना, ये जो आ रहे हैं इस वजह से आ रहे हैं कि ये देखो हिडन है, यहाँ आपको शो नहीं कर रहा .git का फोल्डर, ये क्रिएटेड है, सही है ना। इसमें मैं व्यू जाके मेरे ख्याल से कोई ओपन हिडन फाइल्स भी अगर कर दूंगा तो वो मुझे हिडन फाइल्स दिखाना शुरू कर देगा। सेटिंग्स में आ नहीं रहा ना, .git भी यहाँ पे शो कर रहा होगा आपको, या किसी को कर रहा होगा, किसी को नहीं कर रहा होगा। तो ये गेट हिडन यहाँ पे क्रिएटेड है, तो यहाँ पे सारी वर्जन है। इस फोल्डर को ओपन नहीं करना अगर आपको नजर भी आ जाए। ये गिट इग्नोर की फाइल भी यहाँ पे आपको आ गई है, तो ये दोनों गिट से शुरू हुई, जबकि एलएस में देखो .git नहीं दिखा रहा, ये फोल्डर है मेरे पास। देखो यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ टेम्प, और टेम्प के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ मेरी फाइल .html। यहाँ पे मैं html लिखता हूँ टेम्प इंडेक्स html, ठीक है। तो ये देखो अब मैं ls करूंगा तो मुझे ये टेम्प का फोल्डर दिखा रहा है, लेकिन .git का फोल्डर नहीं आएगा, डॉट लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे आऊँगा, ये खुद रिलोड करेगा। देखिए मेरी फाइल जो है, इसको मैं इस तरीके से कर दूंगा ना, तो ये देखें, इस पर आप क्लिक कर दिएगा, ये आपको ट्री व्यू में दिखाएगा टेम्प फोल्डर के एक अंदर है, वरना वो पूरा इस तरीके ना पाथ दिखा रहा है। इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखें टेम्प का फोल्डर है, और एक गिट इग्नोर की फाइल है, और index5.html की फाइल है। अब गिट इग्नोर का फायदा क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गिट इग्नोर? इफ आई राइट index5.html and I save it, so it will ignore this file and whatever it says that don't look at me, ना, don't try to track me, ठीक है ना। और you can write a name of a folder as well. There is temp, and then there is temp2, and then there is मेरी file in this, and if I write this, and if I write please don't tag me and my parent folder. So okay, now you see that it's going to show temp2 as well, temp2, temp1 and temp2, both files. It is showing both of these files, but I don't want temp2 to be tracked. Okay, I just want to ignore temp2. So what I can do is, okay, let's click this one. It will open this file. I will just write temp2. मैं उसमें फोल्डर का नाम भी लिख सकूँ, जैसे फाइल का नाम लिखा, फोल्डर का नाम लिख दूंगा तो फोल्डर इग्नोर हो जाएगा, फोल्डर चला जाएगा मेरे पास, and of this folder is not getting tracked. These two files are not showing up here, so I can just add these files on staging and write a message adding git ignore configuration, simple as that, and committing it, and I can push it all through UI. Now if I come here, it has 4 commits 6 minutes ago. Let me refresh, 5 commits now. Okay, now what we can do is, now if you change anything in temp index.html,
it will appear. But if you do this in this file, it will not appear. Okay. सो इस जो ये टाइम 2 के अंदर जो मेरी फाइल है उसमें नहीं आ रहा, लेकिन टाइम वाली जो फाइल है उसमें आ रहा है चेंजेस। इसमें हम आ जाते हैं दोबारा से, यहाँ पे मैंने ऐड तो किया हुआ है, मुझे खाली कमिट चलाना है, git commit -m updating file text, and this will move to commit stage, and I can run this git push origin main, this command as well, and this will push to main. Now it will have one more commit, 5. This is a 5 commit. If I reload, it has 6 commits now. All good? Any question? So you can see that how now we have folder as well. We saw you can upload the folder, the files, we can pull. Now we are left with the cloning part. Now let's say you see this repo, for example, learn TypeScript. Okay, you want to copy all this code into your local repository. ये सारा कोड आपको अपने कंप्यूटर में चाहिए, लोकल में चाहिए. So this is ls. Let's create a folder, or it is good to create a folder. Testing. You go into this folder and then you write git clone and just paste the URL. That's it. This whole repo will be downloaded. Okay, all good. This is no rocket science, and you can do code dot, and then you can see that इसके अंदर ये TypeScript node projects का उसने folder बना के उसमें सारा कोड आया था. ठीक है. So आप CD करके उसको फिर open कर सकते हैं. You can do CD and then open on VS Code. I hope it is clear. Clone command is pretty much very simple, very straightforward. And one thing I would like to mention that if you're working on Node or React projects or Next.js projects, they will have packages in package log file. And it will not have node modules folder. So what your first command you usually run is npm install. So this will install it will create node module folder, and you will notice. Okay, let's try out if we can download any such project. इसमें हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, I guess yes. This website has package JSON and package log, and it has git ignore as well. It does not have node modules. Can you guess? Can you tell me why it does not have node modules? Because this git ignore file will have node modules written in it. ठीक है ना, इसमें नोड मॉड्यूल इसलिए नहीं होता कि git ignore के अंदर नोड मॉड्यूल्स लिखा हुआ होता है, ये रहा जैसे. ठीक है, स्लैश डाल दें, स्लैश में कोई मसला नहीं है. ठीक है, तो इस वजह से वो फाइल अपलोड फोल्डर अपलोड नहीं होता, लेकिन यू कैन रन npm install, so फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. All good. Any questions? No, so far I think we have covered all the topics, all of our agenda today. Now इसमें हमने ये सारी कमांड पढ़ी थी. अपने git config installation के बाद git config चलाना है. These are all the command that we study. Let me conclude this session. You learned this command. You learned git init. You learned git add dot or git add file name, the difference between them. Okay. We also learned git commit -m your message here. And how do you commit, how do you push, or how do you pull, or how do you clone, and why and when do you do all that. Okay, and the importance of git ignore file. Now you know what is Git versus GitHub, the difference. This is just a repository this is just a remote machine server where we can host our project, where we can store our project files. Okay, now I think, yeah, as I said, we will cover the branches partly in our later video. All good. Any questions? क्वेश्चन ये है कि गिटहब पे हमने देखा कि ओपन सोर्स पे कोड पड़े होते हैं जिसमें कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं हम लोग ना, ऐसे ओपन सोर्स होते हैं, तो क्या इसमें हम बग्स डालते हैं वो एक्सेप्ट हो जाते हैं उसमें गिटहब पे? क्या वो उसको खराब नहीं कर देंगे? बग्स आप डाल लें, किसी के कोड में आप बग्स क्यों डाल रहे हैं? बग्स को फिक्स करें जी. आपका पार्ट है कि किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे आपने कंट्रीब्यूट करना है. ठीक है, आपने यहाँ मिलकर प्रोजेक्ट पे काम करना है, वो एडवांस टॉपिक में आ जाएगा. ब्रांचिंग वगैरह के जब हम पढ़ रहे होंगे उसमें आपके थ्रू आप ये कर सकते हैं, ओपन सोर्स पे काम कैसे कर सकते हैं. अभी आप अपने लोकल प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज करेंगे, अपलोड करेंगे, कोई प्रोजेक्ट सबमिट कराना हो, और वो हमने देख लिया. ठीक है, बाकी ब्रांचिंग वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट कवर करेंगे. और किसी कोई क्वेश्चन? ये सारा आपने वीडियो दोबारा देखनी है, सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, अपलोड करने हैं गिटहब के ऊपर, आपने शेयर भी करना है यूआरएल के, आपने यार ये रेपो पुश करी है, पुल करी है, क्लोन करी है. जी बताएं, वकार ने भी एनीथिंग यू वांट टू शेयर? वकार ने भी बोले हैं, हैंड रेज किया हुआ है आपने, अगर कुछ नहीं बोलना तो हैंड लो कर दें, और सुबह आप कुछ बोलना है तो आप शेयर कर लें. और इफ ऑल जी सर, how can we add images to readme file? Images to readme, that's not a topic, that's not relevant.
और कोई? यू कैन आस्क मी ऑन चैट में, आप पूछ लिएगा तो मैं बता दूंगा। और कोई क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन अगर नहीं है? Okay, sir. Thank you. ठीक है, सो वी आर लेट्स क्लोज दिस स्ट्रीमिंग एंड दिस रिकॉर्डिंग, एंड ये इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। आप इसको दोबारा देखिएगा और दूसरे लोगों को भी चैनल का लिंक दें, शेयर करें सबके साथ, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, सबको शेयर करें। और जो व्हाट्सएप पे एक चैनल ग्रुप है हमारा टीम कासिम का, वो ज्वाइन करें अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ। और आप में से, ठीक है, तो मैं खैर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ, लाइव रिमूव कर दूँ, देन आई हैव अ ऑफलाइन चैट विद यू। हाउ डू आई स्टॉप दिस लाइव स्ट्रीमिंग? ओके, लाइव स्ट्रीमिंग हमारी स्टॉप हो गई है।